एमकॉम पार्ट 2 IFRS सेमेस्टर 4 क्या कर रहे हैं हम लोग? चैप्टर नंबर 14 दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड ऑल दोस थिंग्स. Illustration. YMJ Limited has measured PPE, that is plant property equipment. Now property plant equipment has measured PPE as per revaluation model and disclosed it in the balance sheet of the company. One of the directors suggested that the policy of the revaluation model should be changed at cost model. Comment. कि अगर परमिसेबल है तो कर देंगे, लेकिन उसको पूरा स्टडी करना स्टार्ट टू एंड है ना. A change in revaluation model to cost model of measurement is acceptable if it satisfies the condition in Indian Accounting Standard 8. The change results in the financial statement providing reliable and more relevant information to the users of financial statement, where the change in accounting policy is permissible as per Indian Accounting Standard. It shall be accounted for retrospectively effect as per Indian Accounting Standard 8. पर अगर एक्सेप्टेबल है, परमिसिबल है, उसकी वजह से ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है तो एक्सेप्ट कर लेंगे. कुछ असर ही नहीं होने वाला है तो काय को दिमाग को खाने का खाली फुकट मगज मारी है कि नहीं? क्या बोलते बच्ची लोग? AN company follows the accounting policy of depreciating its PPE using straight line method. Okay, no problem. The company feels that UDV of the depreciation, okay, written down value, WDV होना चाहिए ना, ठीक है, जो भी है, is more realistic. Okay. The company wants to change its accounting policy to apply depreciation under WDV method. ठीक है भाई, अगर लाइफ अच्छी खासी है, मैंने आपको एग्जांपल यही दिया था, बराबर है. अब बिग इलस्ट्रेशन में आया. WDV method of depreciation is permitted in Indian Accounting Standard 16. The company feels that method of depreciation is more realistic and make financial statement more reliable. Hence, the change is acceptable. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं. DG Limited reported depreciation as expenses in the statement of P&L account. Mr. Dheeraj, one of the director who is CA, feels that this depreciation should be split up into two parts. That is, depreciation on plant and machinery should be reported under cost of sales and depreciation of office furniture should be reported under administrative expenses. काहे का डिलीवरी भैया, मैंने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है, ये लोग काहे का डिलीवरी दे रहे. स्टेट वेदर द चेंज इज एक्सेप्टेबल. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. अगर ये कायदे से अलाउड है कि डेप्रीसिएशन को आप फर्नीचर का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में डाल दो तो ठीक है. अगर आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट कर रहे हैं तो, बट कायदा क्या बोल रहा है? फर्नीचर इज योर फिक्स असेट्स. फिक्स असेट्स पे डेप्रीसिएशन चार्ज होना चाहिए, तो वो डेप्रीसिएशन में ही आएगा. उसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में ले सकते नहीं है, आइडियली स्पीकिंग. हाँ, लेकिन जब हम P&L बनाते हैं, ट्रेडिंग P&L बनाते हैं वर्टिकल में, तो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर हम लोग क्या करते हैं? फैक्ट्री एक्सपेंसेस में डालते हैं. नहीं, मशीनरी फैक्ट्री एक्सपेंस में डालते हैं और डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर हम लोग ऑफिस एंड एडमिन में डालते हैं प्रेजेंटेशन के वक्त, राइट. While dealing with the above situation, following norms should be applied. Is the change provided by the standard? Is the change mandatory by the law? Whether the change will have greater accuracy and meaningful disclosure? By applying this above test, if it is found that the change is not provided by any standard, it is not mandatory by any law, however, it will make financial statement more accurate and meaningful in disclosure. Hence, the change should be acceptable. मैंने बोला ना कि डेप्रिसिएशन और इक्विपमेंट हम लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग में डालते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में डालते हैं, और फर्नीचर पे हम लोग कहाँ डालते हैं? ऑफिस में. कायदे से अलाउड नहीं है, बराबर, लेकिन फिर भी हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए उसको करते हैं ताकि हमारे डिसीजंस परफेक्ट हो, बराबर. Gautam and Company is finalizing its financial statements for the year 24. The management intends to change the method of inventory valuation from FIFO to weighted average. Comment whether this is possible. क्यों नहीं पॉसिबल है? आपको लगा कि भैया मैं फीफो पे नहीं कर रहा हूँ, मेरा कौन सा ये पेरिशेबल गुड्स है, पेरिशेबल गुड्स नहीं है और मुझे वेटेड पे लेना है, तो मैं ले सकता हूँ, है ना. आइडियली स्पीकिंग फीफो किसके लिए है? पेरिशेबल गुड्स के लिए है, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं, राइट. द अबाव चेंजेस विद इन द स्कोप ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8. हेंस इट शुड बी मेड. It will entail prior period adjustment. The change is acceptable. ठीक है.
अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स क्या है? अंदाजे जो आप लगाते हो खर्चे के लिए या इनकम के लिए। 10% डिस्काउंट दिएगा तो मेरा इतना इतना पैसा आने वाला है, इतने इतने डेटर से इतना बैड डेब्ट्स होगा ही होगा, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड है कि 5% बैड डेब्ट्स सही है और अभी तो देश में गरीबी बढ़ रही है तो 10% बैड डेब्ट्स हो जाएगा, राइट? Keeping the economical conditions in the society, you will frame your estimates, right? Keeping the international standards or international conditions, you will frame your estimates, right? Due to uncertainty in the business, there are many items in the financial statement which cannot be measured with precision. Perfection के साथ नहीं हो सकता. They can only be estimated. Estimation involves judgment based on the latest available information. Use of reasonable estimate is an important part for preparation financial statement. It does not undermine their reliability. Perfect नहीं हो सकता, but estimates allowed है. Examples, estimates are required in the following cases. कौन सी cases है? Bad debts बताया मैंने, inventory obsolescence, fair value of financial assets and liabilities, useful lives of depreciable assets, warranty obligations, right? Revision, and estimates may need revision in the following cases. Changes occur in circumstances on which estimates are based, never new information or more new experience. अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन एस्टिमेट्स, यस बताना पड़ेगा, पीएनएल में उसका इफेक्ट जाएगा ही जाएगा, वो असेट या वो लायबिलिटी पे भी उसका असर पड़ने वाला है, राइट? तो यही चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी, नहीं नॉट वरी, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अगर वो नहीं समझा तो ये इलस्ट्रेशन सामने है ही। X Limited purchased a machinery at a cost of 2 lakhs with an estimated life of 10 years with no residual value, यानी कि हर साल का 20,000 डेप्रिसिएशन बन जाता है। It is depreciated at straight line basis, so annual depreciation 20,000। उन्होंने दिया, अच्छा हुआ, हमें तो पता ही नहीं था, हम लोग अनपढ़ गवार जाहिल है ना, नहीं, हमारा भी दिमाग चलता है कि 2 लाख for 10 years, that means per year depreciation is 20,000, correct? The carrying amount of the machinery after 4 years works to 1,20,000. Yes, 2 lakh minus 4 year का depreciation 80,000, so 1,20,000. It was decided in the 5th year that the remaining useful life is only 3 years. Oh my God. तो डेप्रिसिएशन चेंज करना पड़ेगा, बराबर? यस, एंड नॉट 6 years. शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द मशीनरी इन द बुक्स, करेक्ट? तो जो 1,20,000 अभी बचा हुआ है वो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, यानी हर साल का डेप्रिसिएशन आपका 40,000 का हो जाएगा। An estimated useful life has been reduced to 3 years from 6 years. The carrying amount of 1,20,000 is to be divided in 3 years. That is 40,000. Depreciation charged in past 4 years will not be changed. Additional depreciation of 20,000 per annum over and above the past 4 years should be charged to P&L account, and it is disclosed in the financial statements. Correct? Revised depreciation for the next years will be 40,000. Correct? If the change in accounting estimates relate to items of assets, liabilities, and equity, it shall be recognized by adjusting the carrying amount for the related items of assets, liabilities, or equity in the period of change. Then, difference between accounting policies and accounting estimates, पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, उतना डरने की जरूरत नहीं है। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर के साथ ध्यान रखिए। Involves applying new accounting policies to transactions, other events, and conditions occurring after the date of the at which the policy is changed, and recognizing the effect of the change in accounting estimates in the current and future periods affected by the change. It implies that the change is applied from the date of the change in estimates. Change in accounting estimates can affect assets, liabilities, or equity. It is recognized by adjusting the carrying amount of the related assets or liabilities in the period of change. Okay. Prior period error पहले के है, तो पहले क्या क्या आपने गलतियां की थी वो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रायर पीरियड एरर्स करना पड़ेगा। आपको एरर पता चल गया, आपको गलतियां पता चल गई कि ये थी, तो उसको सुधार लेंगे, और उसका अगर अफेक्ट फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको हम लोग स्टेटमेंट्स में बता देंगे। ओके, इसको गो थ्रू कर लेना, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्लोजर करना ही पड़ेगा, बराबर है, हर चीज का। इलुस्ट्रेशन,
BP Limited has shown inventory of 5 lakhs in its financial statement for the year 24. However, the inventory statement missed out couple of pages, the amount working out to 1,25,000, which was lying with the consignment agent. The error was detected in 25 after the financial statements were approved. बराबर है? तो ये कब करेंगे? 24 में करना पड़ेगा क्योंकि 1,25,000 का आपका वहां पे डिटेक्ट नहीं हुआ है. In this situation, the correction of the error in the financial statement would be made retrospectively from 24. तभी से बताना पड़ेगा. हम लोग ने भी किया ना, unrecorded purchases, unrecorded sales. The expenses paid for the purchase of material were included in the purchase of machinery. तो उधर से निकाल के हम लोग ने वहां पे ऐड किया. VK Limited prepared financial statements for the year ended 31st March 25. The accountant examined the statements and reported the following errors occurred in the preceding financial year. Depreciation on plant and machinery was understated by an equal amount to 2% of sales. तो उतना depreciation बढ़ाना पड़ेगा. Provision for bad debts was understated by equal amount to 1% of sales. तो दोनों केस में ये आपके expenses है, बढ़ रहे हैं. Individually, the errors are not material, but they could influence collectively the economic decisions of those who use financial statements. Hence, these errors are material prior period errors. Financial उसका effect हो रहा है. Tansen Limited has machinery with the machinery का एक musical instrument होना चाहिए था ना, with an original cost of 2 lakhs, which it inadvertently omitted to depreciate in previous financial year. लो, अब मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन तो करना पड़ेगा ना, लेकिन आपने प्रीवियसली नहीं किया है. द मशीनरी वॉज एक्वायर्ड ऑन 1st April 22. वाह, तो 22, 23, 23, 24, 24, 25. However, the error should be corrected in the financial year for the year ended 31st March 25. Assume that the impact of the machine is material. The machine has useful life of 10 years, and it is depreciated as per the straight line method. Estimated residual value is nil. How the error will be corrected? क्या करेंगे? The error should be corrected with retrospective restating the comparatives. A third balance sheet at the beginning of the earliest period should be presented. बराबर बताना पड़ेगा. यहाँ पे खत्म होता है अपना चैप्टर 14. I hope you have understood the illustrations also. या हाइप कैसे करना मैंने बता दिया आपको. कमेंट सेक्शन में जाके स्वाइप मारना, उधर हाइप का ऑप्शन आएगा. जितना आप हाइप करोगे उतना वीडियोस व्यू में आएगा, बहुत सारे बच्चों का भला होगा. अपने 4000 घंटे पूरे करने के हैं, 500 घंटे मुझे आपके पास से एक्सपेक्टेड है मिनिमम. 500 घंटे में दूसरे बच्चों के साथ वसूल कर लूँगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. इसमें आप लोग भी अगर नेट सेट देने वाले हो, बराबर है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वीडियोस देखना. उसमें मैं एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड ऑल दो थिंग्स को डाल रहा हूँ धीरे धीरे. ओके, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. थैंक यू. एमकॉम